Hello, friends. Good evening. This is Dr. Sanjeev Arora, psychologist, trainer, counselor, consultant, and I'm here back with a wonderful talk show with a wonderful person. Her name is Monica Dinesh, and I'm really excited to be with her. She is an excellent lady, versatile character, and once I call her, then I will tell her to introduce herself. Hello, good evening, Dr. Arora. Hello, good evening, ma'am. It's a pleasure to be with you once again. After so many years, I still remember when I came for a workshop and you were there, and it was such an amazing thing. Workshop. Yes, of course, it was it was an interesting and amazing workshop. And, that workshop is still reminding me all those things that I learned a lot at that time. Thank you so much for that. No, thank you to you, ma'am. Thank you to you. Thank you so much for calling me in your school. Although it's like now way back. Yeah. And I'm just hoping that once again these offline things starts and the workshop starts, और मैं फिर schools में जाना शुरू करूँ, colleges में जाना शुरू करूँ, universities में जाना शुरू करूँ, corporate houses में जाना शुरू करूँ. I'm missing those training days. I'm really missing those training days. Although the training is going on online, virtual training बहुत चल रही है, but offline is always offline. Absolutely, offline is always offline. We are missing that touch. We are missing that connection. So definitely, offline is offline. Yeah. Absolutely, ma'am. Absolutely. Okay, ma'am. मैंने आपका introduction अभी नहीं दिया. I've just told that you are a very versatile person, and of course you are a principal. I would love that you should give your introduction yourself, please. Okay, thank you, doctor. Actually, there is nothing very exciting about me except that I am working for the children with special needs and specifically learning disabilities, intellectual disabilities, autism, Down syndrome, cerebral palsy, and a wide range of disabilities, basically intellectual disabilities. So right now I am running an NGO also, which is situated in Noida, and we are trying to help people who are underprivileged also, whether they are from, I feel that underprivileged meant is also a kind of special needs. So it's not only the people who are disabled or who are called Divyang are special, but everybody who needs little extra help is special, according to me. So True. I think that is the crux of the inclusive society as well. Very true, ma'am. Very true. Yeah. Because and जो आपने कहा ना कि there is nothing special. I think this is the most special, because dealing with special children is one of the most special thing in the world. Thank you so much. Thank you. I have, I have worked in so many reputed schools. Like I worked with St. Mary's, as we mentioned before I joined. Then I worked for Sri Ram schools also. And everywhere I taught psychology in class 11th and 12th, and that was, so hard for me. I'm so sorry, my cat is troubling. She gets restless and she gets insecure whenever I'm on my live sessions. She wants all the attention from me. That's so sweet. That's so sweet. Okay. Ma'am, we will be talking a lot of things about special needs and learning disabilities. आपसे बहुत कुछ share करनी है चीजें. I mean, I really want that you should lighten up a little bit. लेकिन इससे पहले मैम, just let me know, or probably let the viewers know, that exactly what is learning disability, exactly what do you call these special children, because I understand, I and you both understand, but thoda sa और limelight, because I am giving also a lot of trainings to special educators. I have done my special education courses as well, so I am also giving a lot of special trainings to these young counselors or young educators, special educators. But for our viewers, can you just elaborate more things about what is special education, what are special children, ये क्या होते क्या हैं? सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ. There is nothing called normalcy according to me. That's my personal view, right? I'm not saying that it's written in the book. I'm not saying that it's written in the book, but the thing is,
अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो नॉर्मेलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही थिन लाइन है नॉर्मेलिटी और स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटी और व्हाटएवर यू कॉल। सो जो भी लोग एवरेज में जाते हैं, जो भी लोग सोचते हैं कि एवरेज में है, वो नॉर्मल हम उन्हें कंसीडर कर लेते हैं, और जो उससे वेरिएंट होते हैं, जो उससे अलग होते हैं, हमें तो लगता है कि वो स्पेशल नीड्स है, या उनको कुछ खास खास जरूरतें हैं, या उनके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं मतलब स्पेशल नीड्स बताने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि नॉर्मल बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि Yes. people talk about normal, people talk about special needs and they think that special needs अजूबा है और आसमान से उतरे हुए हैं। So that I wanted to change, right? So I believe in Ma'am, your voice is cracking, ma'am. I'm sorry. I always think that there should be an inclusive society where everybody is welcomed, right? अब हम आते हैं स्पेशल एजुकेशन पे या स्पेशल नीड्स पे। देखिए, बहुत छोटा सा लेमैन टर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ये मैं अक्सर एग्जांपल यूज करती हूँ। आप और मैं दोनों हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। सपोज my requirement of chini is 1 teaspoon and your is 2 teaspoon. So if we both are going to take 1 teaspoon, मेरा पूरा हो जाएगा पर आपका शायद नहीं होगा, right? So that putting extra 1 teaspoon of sugar in your tea is, fulfilling the special needs. So कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं एक नॉर्मल करिकुलम में नहीं पढ़ पाते। इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, लेमैन के लिए हम बात कर रहे हैं, लेमैन की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक रेगुलर क्लासरूम में नहीं पढ़ पाते हैं, या जो एक नॉर्मल क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पढ़ पाते हैं। उनकी जरूरतें थोड़ी सी अलग होती है, उनको थोड़ा सा अलग से पढ़ाने की जरूरत होती है, या उनके लिए चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत होती है। सो दोज आर द चिल्ड्रन जिनको हम कहते हैं स्पेशल नीड्स, जिनके लिए हमें नॉर्मल से हटकर कुछ ये एक्स्ट्रा काम हमें क्यों करना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा काम हमें इसलिए करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं उनके कॉम्प्रिहेंशन में, उनके समझने में, उनके प्रोसेसिंग में, उनके सेंसेस में कोई the only thing I consider is special needs is स्पेशल नीड्स कई सारी तरह की हो सकती हैं, कई सारी तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं। जैसे कि अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो उनके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में कोई एज सच इशू नहीं होता, उनको सिर्फ चीजें समझने में, चीजों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेंसरी इशूज होते हैं। सेंसरी इशूज में हम विजुअल और हियरिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर पीपल हैव प्रॉब्लम्स विद low vision, partial vision, tunnel vision, or any kind of vision problem, they also come under special needs. People who have problem in hearing, who are hearing impaired, hard of hearing, even the deaf, so they all are considered as special needs क्योंकि उनका समझने का तरीका, उनको काम करने का तरीका, उनके पढ़ने का तरीका is different than so called normal or typical people. उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका इंटेलिजेंस लेवल इज क्वाइट it's not up to the mark as we consider normal. नॉर्मल से हमारा मतलब है कि भाई बच्चा अपना पढ़ भी ले, अपना काम भी कर ले, अपने लिए रोजगार भी ढूंढ ले, अपना परिवार भी चला ले। तो हो सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे वो सब काम ना करते। तो अगेन दे आर डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मलिटी, सो दे आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। उनको सोचने में टाइम लगता है, हो सकता है कि वो उस हद तक सोच भी ना पाए जैसे हम सोच सकते हैं। उनको इमेजिन करने में टाइम लगता है, उनको क्रिएट करने में टाइम लगता है। उनके लिए चीजें बहुत सिंपल होनी चाहिए। बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आप छोटे बच्चों से बात करें, आपको कभी नहीं सिखाना पड़ा होगा आपके बच्चे को कि लाल रंग क्या है, या पीला रंग क्या है, या हरा रंग क्या है। बट when we talk in terms of intellectual disability, हमें उन्हें रंग सिखाने से लेकर के, शेप सिखाने से लेकर के, से लेकर के, ABCD से लेकर के, we have to teach them everything. Special educator puts 100%, rather 200% effort, but in
return, maybe our result is 25%, maybe our result is 10%, maybe our result is Yeah. 50%, but not beyond that. एक ये चीज, क्योंकि मैंने इंक्लूजन में काम किया है, मैंने नॉर्मल सो कॉल्ड टिपिकल नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया है, सो आई कैन से दैट डिफरेंस, आई कैन सी दैट डिफरेंस. आपको हो सकता है 5 साल के बाद एक नॉर्मल स्कूल से बच्चा बाहर निकले और आपको लगे कि वो भाई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई बड़ा काम कर रहा है और किसी बड़ी पोजीशन पे है, बट आप एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे के साथ अगर आप बाहर 5 साल के बाद मिले तो हो सकता है आपको पहचाने भी नहीं, जिसके लिए आपने 5 साल तक 10 साल तक इतनी मेहनत करी है, उसके साथ इतने दिन बिताए, हो सकते हैं द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू. So that is one of the challenges, So हमें ना खुद ही सेल्फ सेटिस्फाई होना पड़ता है. स्पेशल एजुकेटर्स नीड टू सेल्फ रिवॉर्ड देमसेल्फ. इवन स्मॉलर अचीवमेंट काउंट्स, इवन वेरी स्मॉल अचीवमेंट. अगर आपका बच्चा लाइन सीधी भी बना लेता है ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, दैट आल्सो काउंट्स, ये काउंट एज अ सक्सेस फॉर अस. तो हम अपना ही पीठ ठोक लेते हैं. इनफैक्ट यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली स्पेशल एजुकेटर्स. आई थिंक कोई भी इंसान हो, उसको अपना सेल्फ प्रेज रखना ही पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन रखना ही पड़ेगा. अदरवाइज स्पेशली इन दीज टाइम्स तो यू नीड टू हैव लॉट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन. एंड यस, यू आर राइट, बिकॉज मेरे मन में भी एक स्पेशल जगह है फॉर ऑल द स्पेशल एजुकेटर्स, बिकॉज since I also deal with lot of special children, I mean I'm training a lot of special educators, तो मुझे भी I have those that small छोटा सा एक ब्यूटीफुल सा कॉर्नर है मेरे लिए, मेरे दिल में स्पेशल एजुकेटर्स के लिए. एंड यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. इट्स एन आयरनी की कुछ चीजें दे आर नॉट वेरी वेल रिवॉर्डेड ऑल्सो. और कभी कभी बहुत सारी चीजें तो मैंने ऐसी भी देखी हैं, काफी कुछ स्कूलों में तो उनको भी दे आर नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड एज educators. They are not even recognized as teachers. They are just recognized as a special educator, और वो and they are just given the work accordingly. कभी कभी तो उनसे कुछ और भी काम कराया जाता है. Lot of schools, and I don't want to name any school, but unfortunately it happens. और आप you're absolutely right, because this is a full time job. और अगर हम 200 या 300 या 400% एफर्ट कर रहे हैं, और we don't know whether उसका रिजल्ट 10% आता है या 20% आता है, 30% आता है. तो इसलिए हमें we need to be self motivated. So you're absolutely right that we have to be self motivated. एक चीज और डॉक्टर अरोड़ा मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ. एक्चुअली क्या होता है, स्कूल को जैसे ट्रीट करते हैं, लेट्स लीव इट, क्योंकि मैंने इंक्लूजन में काम किया है. एंड इफ अ चाइल्ड इज कमिंग टू यू इन अ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाहर जाके ना वो बच्चा ही नहीं आपको रिकॉग्नाइज करता, वो आपको ऐसे देखता है अच्छा पता नहीं कौन है. बिल्कुल स्पेशल एजुकेशन इज इट्स अ स्टिग्मा. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल. स्टिग्मा भी कह सकते हैं. मैं पहले के टाइम पे क्या होता था मैम, यस इट इज, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट देयर चाइल्ड नीड्स स्पेशल एजुकेशन. तो वो वहां से स्टिग्मा होता था. अभी तो टचवुड थोड़ा सा people have started realizing that yes, I have, my child is a little anxious child, या concentration की span की problem है, या dyslexia भी हो सकता है, ADHD भी हो सकता है. There are so many things which autism also is now in a big way. पहले 100 में से एक बच्चे को he was autistic. अभी तो it is like I don't want to say even, but true, very true. तो पहले it was a lot of stigma. अभी भी है even in the rural or probably in the urban areas. अभी भी वो स्टिग्मा काउंट करता है. अभी भी the parents are not very confident of telling their child as a special child to anyone. अभी भी स्टिग्मा है. You are right. Yes. मेरे को लगता है ना सिर्फ स्पेशल एजुकेटर के लिए स्टिग्मा, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए भी उतना ही है. People are still not. हमारे लिए भी उतना ही है. हमारे साथ भी. I mean, trust me. If someone says कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, you want to, you should talk to a psychologist. सबसे पहला क्वेश्चन ही लोग पूछते हैं, पागल थोड़ी हूँ मैं. तो it's exactly. It's same. Yes, see, the only plus point with us as a psychologist is that, I don't know about others, but मैं अपनी बात कर रहा हूँ, since I am dealing with a lot of parenting issues, lot of career issues, lot of special education issues. बहुत सारी ऐसी behavioral issues में deal कर रहा हूँ. तो मेरे साथ तो बहुत सारे experiences है which I could share for hours and hours. तो but anyway, okay मैम, इसमें एक बात बताइए.
tell me about the background. How did you, what made you join this profession? Actually, yeah, that's a very interesting story. You can say the thing is, in our profession, there are only two kind of people which I have encountered ever. One is those who have chosen this profession, and second is those who cannot do anything else. Now things are changing. In last 4 or 5 years, I'm seeing that things are changing. So I am the luckier group. You know, I have chosen this profession. The reason being for that is my first cousin, who is no more, she was elder to me. She was 2 years elder to me. She was born with, intellectual disability. She was mentally challenged. So I saw her growing up and, not going to school, not interacting with anybody. And I saw people are making fun of her. They don't let her play with her. So I just, as a child, it made an impact on my heart and as well as my mind. And I thought, why it's so? Why Didi cannot go to school? Why it is not accepted in the society? What is the reason and how can we do it? How can I help in that? Correct. So that is the only thing which made me. I thought that I'll do this work. I'll work for the people with, special needs. I'll work for the people with disabilities, especially intellectual disability. That's the reason I'm in IT. But I never thought that I will choose it as my career. But I think everything is predestined, and it was God's will. And we have a huge family, so we are good 16, 17 cousins, but among those 16, 17 cousins, I was the only one who thought about it and get into the field. So I think that was God's direction, and I just followed his direction. That's all is the reason for being in this profession. And you ended up, landed up to become a principal. Now tell me that story. Oh, again, that's again interesting story. I started this journey when my elder daughter was born. So she was 8 months old, and I was reading a newspaper that was Times of India, and I saw an advertisement of NIMH. At that time, it used to, now it's called NIPSID, but at that time it was NIMH, National Institute for Mentally Handicapped. So I saw an advertisement of diploma in special education for mentally challenged or mental retardation. So that particularly that advertisement turned my career. I was on maternity leave. I was looking after my baby, and I was thinking that I'll do when she will grow up. But after seeing this advertisement, I went to NIMH, I filled the form, and you will be surprised to know I didn't pay a single penny for that, right? Rather, I got 150 rupees stipend when I joined that course. So I got money to do that course. It was long time back. My daughter is 23 years old now. So yeah, because that time there were very less people who would like to join, because that name was itself a very stigma. It was a stigmatic name, Institute of Mental Health. So that also was a little, but yes, you're right. They were motivating people by giving some, like you got 150 rupees at that moment. That was a good amount. I think that was a good amount. Yeah, it was. It was. Whatever it was. At least I didn't have to pay. But that's what I say, that God has decided everything, and he just told me that this is the path and you have to walk over it. And I just followed his direction. That's all. So okay, after that I joined Tamanna, St. Mary's, Sri Ram, and in St. Mary's I joined as the head of the department. In Sri Ram also I worked as senior coordinator for St. department, and then I got this opportunity. And trust me, I started my career with an NGO, that is Tamanna, and again, I think after so many years, after 14, 15 years working with inclusion, I am again with an NGO and working purely for the children, for the cause. Wow. So that's really exciting. Very motivating. Yes, it is. Yeah, Soren, it is an interesting story. A lot of people are complimenting you on your story. Oh, thank you. Great. Okay, ma'am, let's discuss a few cases. Just give us some idea about, exactly how do you treat, and how, as a generic, if there's a parent, and just as general. So what could be some general rule for treating those children with special needs? जो होते हैं ना कुछ ऐसे typical points हैं
जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा पेरेंट्स को ये चीजें करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिकेशंस, अपार्ट फ्रॉम कोई ट्रूली कोई आ रहा है, कोई स्पेशल एजुकेटर आ रहा है, वो तो अपना काम कर ही रहा है, बट दीज आर सर्टन पॉइंट्स, दीज आर सर्टन रूल्स, दीज आर सर्टन थिंग्स व्हिच यू कैन डू इन योर होम with all these children. Exactly. My first suggestion is stop considering your children as special child. They are equally normal. So treat them as you are treating your normal child. So that's the first point, because I have seen parents, either they are overprotective for the child with special needs, or they are totally ignoring that child, totally avoiding that child. It should not happen. You should give we trust on equality, right? We have that value of equality. It should be there for the children with special need as well. If you are treating your child in a particular manner as a normal child, then it is going to make an impact in that child's life also. So as you said, special educator or the professional are working, so make a rule that you are also working. You are not leaving everything to the professional. You have to take time to spend with your child. You have to take time, especially I'm not being biased, I'm talking to especially mothers here, because mothers and fathers, because जितना आप अपने बच्चे को जानते हैं ना, प्रोफेशनल चाहे 50 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी होगा, उसका एक्सपीरियंस आपके बच्चे के साथ कभी भी उतना नहीं होगा जितना आपका अपने बच्चे के साथ है. You know your child in and out. So you know his weakness, you know his strength, you know everything about the child. Professionals क्या करते हैं, आपको अपने प्रोफेशनल ढंग से ही देखेंगे. They can't give you that kind of touch, that kind of feeling. So you have to spend at least, make a rule that this is my particular time. इतने बजे से इतने बजे तक बैठ करके मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूंगा या करूंगी, whatever. I'm not saying that you do speech therapy for the child, or I'm not saying you do occupational therapy sessions or whatever homework is given to you or your child. But make special effort to spend time with him, quality time with him. और quality time से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उसके सामने एक फ्लैश कार्ड लेके बैठ जाइए या उसके साथ एक वीडियो लेकर के बैठ जाइए. No. Other than learning, there are so many things. Academics के अलावा या इन सब चीजों के अलावा बहुत सारी तरह की learning है जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं. So focus on that. So that is more important, I think, ताकि बच्चे की भी bonding शुरू हो. ये तो मेरे को लगता है कि मुझे नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स को भी आई शुड सजेस्ट दैट कि एकेडमिक्स के परे भी एक दुनिया है, प्लीज मत घुसे रहिए उसके अंदर. Your child needs more of the things rather than academic also. Of course, academic is very important, but academic is not everything for your child. So your child needs lot of things. Do that with him. कुछ नहीं करिए, बैठ करके उसके साथ एक लूडो का गेम खेल लीजिए. I'm talking about the normal child. That is also going to, it's going to strengthen your bond with your child. आपके बच्चे के साथ आपका बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है, ताकि कल को when your child is in adolescence, जब वो सारे इश्यूज आने शुरू होते हैं, एडोलेसेंस इश्यूज आने शुरू होते हैं, यू आर एट अ बेटर स्टेज टू कम्युनिकेट, टू इंटरैक्ट विद योर चाइल्ड. सो दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. एंड देन आई वुड सजेस्ट दैट अब तो सर मुझे लगता है कि अब तो इंटरनेट आने से लाइफ इतना इजी हो गया. यू गेट एवरीथिंग ऑन द क्लिक ऑफ द बटन. Read about it, make awareness, create awareness, and if you need support, please don't hesitate. Ask for support. Ask for support, especially for mothers. Ask for support from your husband. Ask for support from your family. Ask for support from your in-laws. Support is very very much important. हमने females को इतना glorify किया हुआ है ना. Everybody wants to be the ideal बहू and ideal माँ. कोई इंसान नहीं होता, भगवान नहीं होता. We don't have all the powers, all the superpowers. I know mothers are super mom, but still you need help, because your health is equally important. If you will be healthy, your child, you will be able to help your child better. So mothers, please consider this and ask for help. Don't just go or ruin your life on this. It's the responsibility of the society also. Right, very true. And few points I would like to add on this, ma'am. First of all, well, you rightly said that don't rely always on the professionals, because that's what I always say to the parents or to the teachers even, कि बच्चों का जो सबसे पहला स्कूल होता है वो घर होता है, और जो सबसे पहले टीचर्स होते हैं वो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं.
So whatever you would do, the child would do, immaterial of whether the child is a special child or with no special. Yeah. So I personally feel that and one more thing which I really admire about that female really have lot of strength. I mean, in comparison to our male. So I mean, really, it's a hats off to the fraternity of females, and the patience level really counts, especially with these special kids. I think you need to have a lot of patience, because they will not do what exactly you want them to do. They would do whatever comes in their mind. तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा पेशेंटली इनको हैंडल करना है. यस, आपको नॉलेज होनी चाहिए. यस, यू आर राइट. आजकल तो इंटरनेट इज ग्रेट. आपको नॉलेज होनी चाहिए. वट एवर योर चाइल्ड इज, वट एवर द प्रॉब्लम योर चाइल्ड इज फेसिंग, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्सेप्टेबिलिटी, एंड सेकेंड इज even in the society, don't hesitate to say that this is what is happening in my family, or probably my child is undergoing all these things. Because I think ki, if you are really accepting the things what you have, and you are distributing those things into the society के साथ एक role model बन जाता है. You become a role model. So if there is anyone else who has this problem, I am sure that person would approach you first. क्योंकि आपने ये बताया है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम है. बहुत सारे पेरेंट्स तो चुप हो जाते हैं, राइट? तो जिनको नॉलेज मिलनी भी चाहिए, वो नॉलेज बेचारों को नहीं मिल पाती. सो परफेक्टली, एब्सोल्युटली. तो उसमें हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि इस चीज को, ये जो जेनरिक पॉइंट्स. That's what I said. Treat your child as a normal child. जैसे आप उसके साथ बिहेव करते हैं, वैसे उसके साथ भी कीजिए. मतलब शादी में जा रहे हैं, प्लीज टेक द चाइल्ड. रेस्टोरेंट जा रहे हैं, प्लीज टेक द चाइल्ड. ऑफ कोर्स आई मेंट दैट. मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही नहीं चाहिए कहीं. होना ही नहीं चाहिए. एब्सोल्युटली मैम. ओके, कमिंग ऑन टू द सर्टेन अदर थिंग्स. मैम, इन लोगों के लिए देखिए, गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दीज पीपल. Of course, schools, अभी तो CBSE का रूल भी है that you need to have a special educator in every school. अभी, but still, the career aspects, because बहुत सारे moms, बहुत सारे parents जब मेरे पास आते हैं, I have few selected careers for these special kids. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि these special kids, इनके लिए career prospects क्या खुले हो सकते हैं? सर, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे मतलब अगर हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को छोड़ दें, मतलब अगर हम ये सोचें कि सी इन स्पेशल नीड्स वी आर टॉकिंग अबाउट IDLD एंड ऑटिज्म, वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं. वी सॉ दैट वन ऑफ द स्पेशल नीड्स पर्सन हैज क्लियर्ड IAS एंड ऑल दोस थिंग्स. बट इन टर्म्स ऑफ ID एंड LD पीपल आई एम टॉकिंग हियर, ऑटिज्म पीपल आई एम टॉकिंग हियर. अगर हम कॉम्प्लेक्स चीजों को छोड़ दें, इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह, इस मेडिकल, इन सब को छोड़ दें, तो देयर आर लॉट ऑफ profession which our children can do. Lot of profession. The highest building profession right now is multimedia courses, multimedia areas. I am seeing that children are doing really good nowadays with learning disability. Designing is one of the courses which I have felt that our children are excelling. Academics के अलावा then I have seen creativity में, because they are very good in creation. So they are not able to express them in language, in words, but they are very good in expressing it in other way of art. So their designing is very good. So one of my student is doing designing. One of my student is doing mass communication. One of my student is so creative. He can change anything, waste material according to his needs. He has designed his own room and it's beautiful. He has utilized tires to make tables and sofas. So what all it is? It is designing. Then there are children who are doing extremely good in other areas also. Retailing is one of the areas. So I'm not saying the traditional, conventional professions, caning or masala making or candle making is no more relevant to the society. This is my, this is what I am thinking. Of course, everybody cannot. A lot of suggestions are coming, ma'am. Stitching and sewing, painting, photography. Creative things.
lot of things, singing, of course, artists, models. I mean, even models. Oh yes, yes. We have seen so many special models also. Yeah, Yes. that's true. That's true. Even with Down syndromes, I have seen a Down syndrome as a news anchor. Not in India, of course. It's in Germany, but yes, there are so many professions. I mean, we have seen. We are training our children, even teaching, even teaching. Yes. So, Yes. nursery teacher, computer teacher, they can do teaching as well. So there are so many professions where our children can enter and mark their names. So even we have seen entrepreneurship. They can be entrepreneur. A restaurant. If you have heard about, there is restaurant like Yes, Eccles, yes, I've heard about those restaurants. Arfan, I've been to those restaurants. In fact, Eccles I and have Arfan. trained few people in those restaurants. Wow, that's great. That's great. And now I'm happy that multinational companies and other companies are willing, like Lemon Tree Hotels and other things. Yes, yes, yes. They are open to employ our students. So that is really great. But Yeah, in we fact, need more of them. Indian government has also ordered a lot of these Fortune 500 companies and the corporate levels to help these people by giving them employment according to Yeah. whatever the academic results, or probably according to whatever the personalities are all about. So it's great, but Yeah. then still, still I feel that there has to be a lot of push अभी भी बहुत सारा अभी भी इन लोगों को push देना जरूरी है. इन लोगों को expose करवाना बहुत जरूरी है कि ये these are some activities, these are some corporate levels, these are, so I think कोई ऐसा चीज missing है मैम अभी भी. At one stop shop there has to be a small university, probably, but this is what I feel. There has to be a small university or probably a small college where only these special children are being given admissions, and they are trained and they are equipped with a lot of things so that they can live a normal life in the near future. Any programs for that? Anything? I mean, any plans? It just struck my mind. See, I agree to what you are saying, but what I feel, I think every university should have that space for special needs. I mean, we should create universities especially for them is absolutely fine, but why can't they be integrated in all the universities? There should be a rule that they should be allowed in the universities to take higher Oh yes. education. Oh yes. Oh So yes. Yes. they should be trained when we have already the infrastructure. Why should spend so much money on making another infrastructure? They should Very be true. included there. Very true. Just like all these schools have been given instructions to include them. So I think universities also need to have those. No, I was talking about a typical training center. When these people Yes. pass out from the universities, there has to be some training center, some professional training center, vocational training centers where these children could be equipped more, could be could be charged up a little more, and they would be given some Yeah. good employment for them. So the NGO which I started in 2018 was started with this objective only, because I have seen that cities like Delhi and NCR have a lot of things being done for the children who are younger stage. Schools हो Right. गए, inclusion हो गया है, therapy centers खुल गए हैं, बहुत सारे centers है for them. But once the child is 18 years or 14 years or 15 years, जब बोल दिया जाता है उसको कि भाई अब स्कूल नहीं cater कर सकता, 18 साल के बाद आप अपना बच्चा ले जाओ, it is hardly Correct. anything done. So basically, Astitv had a dream. Astitv has an objective of establishing. Astitv is an NGO which I started in 2018 in Noida. So it has a dream to make a kind of place what you are suggesting, what you are saying. I want to establish a vocational unit and a center and a unit where children can get education even after 18 years. Because हमारे जो ID वाले बच्चे हैं ना, उनका education तो कभी खत्म नहीं हो सकता. They need to train in different things. They need Wow. to train managing their finances. They need to train, managing their families, their homes. I mean, if not families, at least their homes. They need to train to manage their activities of daily living, to train plan their trips for their luxuries. There are a lot of things where they need training and education. Definitely, we can do it. How to handle their money, how to manage the time, how to learn work ethics. Because as I mentioned, एक एक चीज हमें सिखानी पड़ती है. जब हमें रंग Exactly. सिखाने पड़ते हैं,
तो हमें उनको वर्क एथिक्स भी सिखाने पड़ेंगे if they are employed, right? So I want to Exactly. establish something like that with these kind of skills, कि उनको वहीं पर ही मल्टीमीडिया भी सिखाया जा रहा है according to their needs, वहीं पर ही उनको I forgot to mention hotel management is also one of the Yes, that's what bakeries. I mean, oh my God, bakeries. bakery, culinary, hotel management, lot many things which our children can do. So I want to establish a vocational center where these white collar jobs are trained. They are trained in Yes. these white collar jobs also. Exactly, बहुत हो गया, बहुत हो गया दया पे जीना, बहुत हो गया मतलब कैंडल बेचना. I don't think our children deserve that. They deserve much more than this. Absolutely. So, Don't worry, ma'am. Let's start it. And I have one more dream, Sanjeev sir, मैं यहाँ पे mention करना चाहती हूँ. I want to have a place where these adults with special needs can live with dignity. They can earn their money. They can live their life as you and me are living. They can plan their chuttis. They can go to the malls. They can go to the movies. They can enjoy their weekends, you know, and with full dignity, where nobody is, you know, staring at them with weird eyes. So Correct. that is my dream, to make an assistive home for them. No, definitely, It will be ma'am. their home. Definitely, we'll do it because intentions होनी चाहिए और intentions clear होनी चाहिए. हमारी intentions clear हैं, definitely कुछ ना कुछ जरूर करेंगे. बहुत सारे suggestions आ रहे हैं, computer operator and hotels and my God, people are loving it. Thank you, friends. Thank you, everyone. Thank you. There was a question from one of the probably I need to understand where it's gone. That how do we remove this social stigma? So he was asking us, how do we remove this social stigma? I think there are only two ways to remove the social stigma. Number one is acceptance, and number two is vocal. You need to be vocal about it. Okay? आपको accept करना पड़ेगा और आपको vocal होना पड़ेगा. God forbid अगर कोई ऐसे cases हैं आपके घर में, कोई भी ऐसे, first of all उसको accept कीजिए, and secondly be vocal on that. आप किसी से भी बेझिझक बात करें, खुश होके बात करें, स्माइल होके बात करें, बेचारा मत बनाएं अपने ही बच्चे को. बिल्कुल, बिल्कुल सही. And be proud of him. I'm sure भगवान अगर उससे एक चीज ली है, उसके पास 100 चीजें दी हैं. Now it's in our eyes कि हम वो 100 चीजें कैसे निकालें, हमें कैसे दिखे वो 100 चीजें. And trust me ma'am, अगर हमें उस 100 में से 10 भी चीज मिल जाती है ना, तो वो that child would be successful than any other person. Agreed, absolutely. जो आप कह रहे हैं वोकल होइए, that's really a beautiful line. वोकल होने की तो बहुत जरूरत है. सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है और तब हम सोसाइटी को बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट कीजिए. जब तक परिवार नहीं एक्सेप्ट करेगा तो हम सोसाइटी से नहीं सोच सकते हैं कि वो भी एक्सेप्ट करेगा. So that's definitely a key. Accept and create awareness. So आप दूसरों को भी बताएं. Yeah, and help them out. Be empathetic with them. Don't show sympathy. They don't need sympathy, and none of us need sympathy. We need empathy. Everyone, even the normal child or any other special child. I think हमें empathy की ज़्यादा ज़रूरत है, push की ज़रूरत है, थोड़ा सा राह दिखाने वाले guide की ज़रूरत है, and that's it. We are there. Absolutely true. 110%. I agree with it. Wow, great. So there's another by making people more aware. Yeah, sure. Okay, ma'am. Anything. It's such an interesting topic. अब मजा आ रहा है बात करने में. Thank you. मुझे भी आ रहा है. Okay. Anything else you would like to limelight? You know, in pertaining to their careers or pertaining to the education system or anything else? First of all is our government has made so many policies but implementation नहीं हो रहा है. That is really sad. Implementation का जहाँ पर बात आता है, मतलब अगर जब you know, when I started my career I thought it should happen, this should be there, this should be there, and when I searched about it, everything was there, everything's there on the papers. But when we see in the real life, when we see practically, things are not there. Even you know, right to education के को ही ले लीजिए, या सर्व शिक्षा अभियान जो चला था उसको ले लीजिए, या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले लीजिए कि कोई स्कूल स्पेशल नीड्स को नहीं मना करेगा. पर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली जैसी जगह में 100% स्कूल्स लेते हैं एडमिशन स्पेशल नीड्स का? नो, दे हैव अ डिफरेंट एडमिशन कमिटी हु चेक्स कि भाई बच्चा स्पेशल नीड्स तो नहीं है. सो
इस तरह की मेंटालिटी को हम हमारे जैसे प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स का सपोर्ट के साथ ही हमें ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है हिंदुस्तान के अंदर स्पेशल एजुकेशन की। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो जस्ट हमने अभी अभी पैर बढ़ाना शुरू ही किया है, मंजिल तो अभी बहुत दूर है, लड़ाई अभी बहुत बाकी है। एब्सोल्युटली, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम सिर्फ स्कूल को ही टारगेट कर रहे हैं, अभी तो हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। अभी एम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत ही बड़ा ग्रे एरिया, क्या ब्लैक एरिया है, वहां तक तो हम अभी पहुंचे ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। ना पेरेंट्स सोचते हैं, ना एजुकेटर्स सोचते हैं, ना प्रोफेशनल सोचते हैं, और ना ही सोसाइटी सोचती है उस बारे में। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन सबके पीछे पड़ना पड़ेगा, उन सबके लिए लड़ना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई में हम सबको साथ खड़े होना पड़ेगा, तभी हम जीत सकते हैं। सिर्फ पॉलिसीज होने से काम नहीं चलेगा। दैट्स अ मेजर चैलेंज व्हाट वी आर। I think it is there. Very true. There's a question, ma'am, coming up. What should I do when my elder brother gets hyperactive and he is not showing improvement as a younger sister? What can I do? How old is the child? Number one. Number two, if the child gets hyperactive, there is definitely a reason. Maybe we are not understanding that reason. So we have to find out the reason of it, why the child is not. See, there can be n number of reasons. You know, bacha may be having some pain, bacha may be having some communication issues, maybe he needs something and we are not able to understand, maybe you know, it's his requirement something and we are not able to fulfill, और वो बच्चा express नहीं कर पा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर एनर्जी बहुत है इस वक्त and he has to vent it out. So we need to find out the reason, और उसी के हिसाब से हम उसका solution कर सकते हैं। अगर उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है और उसको वेंट आउट करना है, तो हमें वो एनर्जी चैनलाइज करने के तरीके ढूंढने होंगे। वी हैव टू गिव हिम फिजिकल एक्टिविटी। अगर उसके साथ सेंसरी इश्यूज है, तो हमें वो सेंसरी फीड देना होगा, सो दैट हिज सेंसरी इश्यूज आर सेटल्ड। अगर वो किसी चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो हमें वो उसको कम्युनिकेशन के वेज देने होंगे, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। सपोज उसके पेट में दर्द हो रहा है और मैं नहीं समझ पा रही, तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल गेट हाइपर एक्टिव। सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू, मतलब सिर्फ हम स्पेसिफिकली ये बोल दें कि बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा है, हाउ टू कंट्रोल। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाई द चाइल्ड इज गेटिंग हाइपर एक्टिव, एंड there is a reason behind it. So we need to find first the cause. This is what I think of. Correct. You know? Correct. So I think this question was asked by some Soumya who's there with us. I think Soumya, I think you need to get in touch with either of us. You can get in touch with ma'am, or you can even get in touch with me. So we can sort out some solutions for this, because ये एक बहुत detailed topic है. हमें she's right that we have to understand. पहली बात तो हाइपर एक्टिव का डेफिनेशन समझना पड़ेगा, बिकॉज स्पेशल चाइल्ड का हाइपर एक्टिव का डेफिनेशन अलग होता है। अदरवाइज यू नो, विद द चाइल्ड इज नॉट अ स्पेशल चाइल्ड, उनका हाइपर एक्टिव का डेफिनेशन अलग है। सो इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, रिक्वायर्स फ्यू सिटिंग्स एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। एनीवे मैम, what are your next plans now in coming future? In coming future, as I told you, I'm just waiting that let this pandemic get, you know, settled down, and I'll start on my vocational thing. And NIOS, I am really keen to work. I'm training few of my special needs children to clear NIOS, as they are not able to settle in formal education system of CBSE or ICSE board, right? So NIOS is giving some leverage to our students. 2 साल का कोर्स आप 5 साल में कर सकते हो, 1 साल में आप 2 सब्जेक्ट दो, 6 महीने के बाद फिर, you know, that kind of flexibility is there. So I'm willing to start with the full-fledged NIOS thing for the children with special needs, and a vocational center with that, and skill building in vocational. So that is my plan right now. Let's see when it happens. But thing is, I again started to do it, and again this second wave started. मतलब भगवान जी भी चाह रहे हैं कि भाई अभी करो, तुम संघर्ष करो, अभी तुम्हारी जिंदगी भी संघर्ष बाकी है। नहीं, सब अच्छा होगा मैम, and I'm always with you. And genuinely, whenever you start, probably I can be a hand for you. Definitely, you need my any assistance. I am always there for all these noble causes. Of course, I love I love humanities, and of course, I love children. As a child psychologist, you can understand that. So, thank you so much, ma'am. It was great talking to you, and there's so many things we could talk.
anything you would like to ask or say to our viewers, or you would like to ask me, or anything? Something is left. As you said, there is so much to talk there. The topic is so vast. Only thing is seeing the situation right now, Sanjeev sir. I think I know that children are imprisoned कहूँ क्या, शायद लॉकडाउन का मतलब वही होता है ना, डेली हो गया हमारे बच्चों को, पिछले 1.5 साल से बेचारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकले. आई नो पेरेंट्स आर सफरिंग, I know children are suffering. Lots of behavioral issues are coming up with the children. Yes. I'm getting messages, I'm getting calls from the parents how to deal with this, how to go it. And जो initially first line जो आपने कही थी offline, वो जो touch है, वो जो एक socialization है, our bachas are missing a lot, and so does our parents. So I think किसी भी तरीके से हम इस चीज को तो पूरा नहीं कर सकते, फिजिकल जो सोशलाइजेशन है उसको तो पूरा नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली गेट कनेक्टेड थ्रू सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एज यू आर डूइंग इट. सो प्लीज स्टार्ट डूइंग सोशलाइजिंग विद योर चाइल्ड एंड let them give that opportunity to mix with others, चाहे virtually ही क्यों ना हो. So start working with them. और अगर वो घर पे हैं तो उनको लूज नहीं छोड़ दीजिए, make a routine for them, let them work. अगर वो किसी स्कूल में जा रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली try to help them. और सर मुझे लगता है ऑनलाइन पता नहीं दो धारी तलवार की तरह, इधर से भी काटती है उधर से भी काटती है. It has benefits also, it has it's an irony that you're absolutely right that there are so much anxiety in parents and children that we are dealing every day. Ab to matlab every day I have a session. In fact, after this session I have another video counseling from a parent, and so we'll be dealing with so much. And unfortunately, maximum time the question is online studies se ye kaise, and we are doing an online counseling. So imagine what an irony. Anyway, ma'am, there's another question that I think we'll take up this last question. How to make an autistic child more interactive with others? First of all, as you said, create awareness and give him exposure. Give the child exposure. हम क्या करते हैं कई बारी हम उसको ना, मुझे एक सर बहुत वियर्ड चीज लगती है, आई एम सॉरी इट्स नॉट फॉर दैट पेरेंट, आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स. हम स्पीच थेरेपी के लिए बच्चे को लेके जाते हैं, 45 मिनट का सेशन देते हैं, हफ्ते का 2 या हफ्ते का 3 सेशन हम देते हैं, एंड वी थिंक दैट स्पीच आ जाएगा. स्पीच और कम्युनिकेशन इज नॉट 45 मिनट थिंग, इट्स 24 hours, throughout the life. Communication ongoing process. वो चाहे आप verbal communication कीजिए, gestural कीजिए, or whatever way you do. So there are a lot of technique for even autism also. PECS है, picture exchange communication system है. उसके अलावा Macaton है. There are gestures. There are I'll not go to sign language, but you first of all you have to give him that opportunity to interact, to communicate. उसको मौका दीजिए communication का, right? हम क्या करते हैं, as mother, I am also mother, so I can understand that feeling. हम बच्चे को परेशान नहीं देख पाते at times. What we do, we give him whatever he wants because I am understanding what he wants, right? We have to give him opportunity to communicate. जब तक आप उसे exposure नहीं देंगे, जब तक आप उसे opportunity नहीं देंगे, वो नहीं करेगा. ये human tendency है सर. मतलब अगर मुझे बैठ करके ना आराम से यहाँ पे AC चला करके मुझे बोल दिया जाए कि तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. आपके अकाउंट में हर महीने इतना पैसा आ जाएगा एंड यू जस्ट चिल एंड हैव योर लाइफ एंजॉय, तो व्हाई वुड आई वर्क यार, राइट? तो अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको कोई रिवॉर्ड चाहिए, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट. एंड सिमिलरली इफ द चाइल्ड नीड्स टू, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू इंटरैक्ट, स्पेशली इन ऑटिज्म, you have to work, you have to give him opportunity, you have to give him exposure. तो जब तक आप ये दोनों काम नहीं करेंगे, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा सा दिक्कत होगा. स्पीच थेरेपिस्ट को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करते रहिए. स्टिमुलेशन दीजिए उसको, वर्बल स्टिमुलेशन दीजिए उसको, लैंग्वेज दीजिए उसको, अंडरस्टैंड करने दीजिए उस लैंग्वेज को. और जब आप वर्बल स्टिमुलेशन की मैं बात कर रही हूँ तो ये मत करिएगा कि बहुत सारी बातें आप एक साथ बोल जाए, बच्चे को कुछ समझ में ना आए, बोले मैम ने ऐसा कहा था. ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ. वर्बल स्टिमुलेशन का मतलब है कि आप टारगेट कर लीजिए आपका बच्चा किस लेवल पे. सपोज वो 5 वर्ड्स अभी बोल सकता है और आप चाहते हैं 10 वर्ड्स बोले, तो सिलेक्ट दोस 10 वर्ड्स कि वो 10 वर्ड्स को यूज करना सीखे, उन 10 वर्ड्स को समझे, उन 10 वर्ड्स को पहले उसको समझ में आए, तभी वो उसको यूज कर पाएगा. और उसको एवरीडे लाइफ में यूज करे, एवरीडे लाइफ में उसको यूज करता रहे.
एब्सोल्युटली, मतलब फिर ये नहीं कहिएगा कि मैम ने कहा था कहानियां सुनाना शुरू कर दें और सुबह से शाम तक हम वी आर यूजिंग डिफरेंट एक डिफरेंट और वर्ड्स। चीज मैम इसमें एक और चीज डालना चाहता हूँ, दैट अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स लिमिट, बिकॉज बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हम सोचते हैं कि 25 वर्ड्स, सी आई टेल यू एवरी पर्सन इज अ यूनिक पर्सन। हो सकता है मुझे 2 बार पढ़ने में याद हो जाए, हो सकता है आपको 3 बार पढ़ने में याद हो सकता है वन ऑफ माई फ्रेंड उसको सिर्फ एक ही बार पढ़ने में याद हो। तो कंपैरिजन मत करें, प्लीज डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी अदर चाइल्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डोंट कंपेयर। हो सकता है आपका बच्चा as a special child can only learn one word every day. It's absolutely fine, no problem, no सर problem. आप एक बार खुद तो करके देखो, आप भी 5 वर्ड से ज्यादा नहीं याद कर पाओगे। एब्सोल्युटली यही मैं कहने जा रही थी, वन वर्ड अ डे इज ऑल्सो अ बिग गोल फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑटिज्म। तो अगर वो Absolutely, इतना भी करता है तो यू शुड बी हैप्पी। absolutely, And absolutely, one more absolutely. thing that I want to add, बच्चे को मैंने देखा, I know, I understand parents also get frustrated, parents also get exhausted, but still I think positive reinforcement is the best policy. True, very true. Reinforce positively, control yourself. ठीक है, कभी कभी आपको भी मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। आई वी कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर एग्जॉस्टेड, बट स्टिल प्लीज। एंड दूसरी चीज, रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। उसका डिग्निटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका है। इट्स फॉर द एवरीवन, नॉट फॉर विद स्पेशल नीड्स चाइल्ड, बट every child has its self respect. Don't hurt that. That is very very Absolutely. much important. Wow, ma'am. Thank you so much. Mazza aa gaya. It was such an enlightening and such a learning experience that Thank it is great talking to you. And though after a long time, but वापस after वो सारी years. memories, yeah, वापस वो सारी memories आ गई. Anyway, ma'am, thank you so much, and may the efforts of us, you, and every counselor, pay results, fulfill, बच्चा अच्छा बने, पेरेंट्स सेटिस्फाई हो। आई थिंक इससे ज्यादा रिवॉर्डिंग हमें और कुछ चाहिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। एंड आप मुझे इतना बोल रहे हैं, आई थिंक credit of making this session lively is you. It goes to you. You're always like that. I mean, around 8 years ago when we had this workshop, you were this much energy was there, this much enlightenment was there, this much excitement was there. It was here also. So the Oh, thank you constant so much, factor ma'am. is Dr. Sanjeev Arora here. Thank you so much, ma'am. It is a pleasure. God bless you, and may you rock always, and may God be with you for all your work. Thank you so much. I'll Thank you see so you much. later, ma'am. Thank you, viewers. Thank We are you. signing off. Please be in touch with ma'am or in touch with me if there's any issue pertaining to any behavioral, any parenting issue, any special child issue. Please be vocal and accept it. Thank you so much, Absolutely. ma'am. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you so much. All right, friends. Thank you so much. God bless you all. I'll see you next time with wonderful guest once more. Thank you.